अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक मरतबा फिर क्रिकेट क्लिनिक की एक न्यू एपिसोड के साथ साइम, मुदस्सिर और आसिफ हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी दो वार्म अप गेम्स हुई हैं उसके बारे में, क्या हमारे तासुरात हैं, any learnings we got from that, talk about the big picture, the perspective of the warm up games, and then we'll transition towards the first official game जो हमारी होने लगी है on Friday, October the 6th, against Netherlands on the same venue, which is the Rajiv Gandhi Stadium in Hyderabad. तो उसकी बात कर लेंगे। क्या हमारे चांसेस आपको लग रहे हैं, प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए। तो इस ये दो हमारे मेन टॉपिक्स हैं इस एपिसोड के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द टू वार्म अप गेम्स। पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। Unfortunately, we didn't win either of the two, although ऑस्ट्रेलिया की गेम में we went very close. 14 रन से हमारी लॉस हुई। We a number of batters batted well. दूसरी गेम के अंदर भी बैटिंग तो हमने 350 ऑलमोस्ट रन स्कोर किए थे, बट आप बॉलर्स को नॉट डिफेंड। क्या बिग पिक्चर लर्निंग्स हैं आप लोगों के ख्याल में? मैं आप अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा क्या टेक अवेज हैं, एंड शुड बी हम किस लेंस के अंदर इन वार्म अप गेम्स को देखें? इज इट रियली ऑल अबाउट विनिंग और लूजिंग, या विनिंग और लूजिंग इतना मैटर नहीं करती, इट्स अबाउट ट्राइंग योर रिसोर्सेज एंड गेटिंग द पजल राइट? आसिफ, आप स्टार्ट करना चाहोगे? Oh, जी, Assalamu alaikum. Yeah, it has nothing to do with winning or losing. I mean, of course, we have a reactive fan base, and so no matter what happens, everything's going to be looked at under the microscope, and people will judge one way or the other. But it's just an idea. Get a sense of the conditions. These are the ground you're going to play your first two matches on. We've been very fortunate that we're having our practice matches in the same ground that we're playing our first two matches in. Get your batsmen, get them used to the conditions, get them to play. Get your bowlers in a little bit. Don't want to overbowl anyone. I think we probably overbowled a little bit today with Haris Rauf. But, I think the biggest example, because we know in the history of cricket, the most successful ICC team is Australia. And you see how they treated it today. They were competitive for a while. Then in the middle, they had Warner and some of these guys bowled some overs for fun. They didn't care whether they won or lost, and their fans aren't going to judge them for that. That's how you need to look at it. This is just to get yourself warm, get yourself going. So the results don't matter. You learn. And we as well, like we could have gone for the kill, but Babar Azam retired himself, right? Because to him it wasn't that much about winning; it's about giving other people a chance, right? And we are not, even though we're still not in form, this team does not have that fragile of an ego to where, losses like this will affect us. They shouldn't. So I think you take your lessons, learn them, see where there are some problems, and you identify those and work from there. I'm not in the least bit worried about the results of these two matches. ठीक ठीक। नहीं, होपफुली हमारे फैंस भी अगर आपकी तरह का आउटलुक रखें तो हमारी टीम के लिए बहुत फायदा हो जाए। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम जितना हम लोग प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर कि देन दे पैनिक एंड दे स्टार्ट सॉर्ट ऑफ हिटिंग द पैनिक बटन। मुदस्सिर, आप अग्री करोगे या कुछ डिसएग्री या कुछ ऐड करना चाहो जो आसिफ ने भी बात की है अबाउट द पर्सपेक्टिव, किस लेंस के अंदर हमें वार्म अप गेम्स को देखना चाहिए और कुछ हम चीजें डिफरेंटली कर सकते थे वर्सेस व्हाट वी डिड? I mean, it's a warm-up start to fine-tune your team. Ideally, तो ये था कि you try to play your bench, let people who are crucial like Fakhr to give them some knocking. तो बस पहले मैच से मुझे लगता है कि थोड़ी ये हुआ था कि ये रिजवान ने अच्छा खेला, बाबर ने भी। आई विश के वो 50 पे अगर वो चले जाते। मगर कि सऊद का जो बैटिंग थी, इट वाज एन आई ओपनर। प्रॉब्लम सऊद की ये थी कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर है पर ही इज नॉट नोन टू बी अ बिग हिटर। मगर जिस तरह उसने उस दिन एक्सेलरेट किया, और टेस्ट में भी हमने देखा अगेंस्ट स्पिनर, लाइक टू गेट वन बाउंड्री पर ओवर, ही कैन डू इट अगेंस्ट स्पिनर। ये कि पेस का बस है था कि वी डोंट नो how he's gonna play against the pace. But I think that was वो अच्छी इनिंग थी सऊद की, उससे कुछ आइडिया हो कि we have another player who can walk into that role. और हसन अली की नई बॉल, I think he was decent with new ball in both games. वही स्पेशली आज की गेम में तो इकोनॉमी भी अच्छी थी उसकी। और इसीलिए वो सिलेक्ट हुआ है। लोगों ने एक शोर मचाया हुआ है
किसी से पूछो कि नया बॉल आप कराओगे किससे, कोई है ही नहीं बैकअप। जो दो लोग थे, दे आर ऑल आउट, लाइक इमाद और आमिर, दे आर गॉन। स्पेशली आमिर इज नॉट कमिंग बैक, इमाद मे बी T20। तो उनके बाद देयर वाज अ वैक्यूम जो शाहीन और नसीम ने दे फिल इट अप बेसिकली। तो आई थिंक पॉजिटिव है हसन, जैसे ही कैन डू अ न्यू बॉल। हारिस को भी वी ट्राइड विद अ न्यू बॉल, वी न्यू इज नॉट गोना वर्क आउट। थोड़े रन किए जो सऊद ने किए आज। इफ्तिखार को चौथे पे भेजा, ही नेवर गेट्स दैट मेनी बॉल्स, तो उसको मौका मिला एंड ही स्कोर्ड। आई थिंक दैट वाज बिग के ही कैन आल्सो हैंडल द इनिंग्स के, अगर विकेटें गिरती हैं तो इफ्तिखार भी अच्छी फॉर्म में लग रहा है। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आगा सलमान का लग रहा है, उसने रन तो किए हैं उस दिन मगर वो इतने क्लीन नहीं थे उसके बल्ले पे। चले आगा का अभी हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी बात कर लेंगे व्हेन वी आर सिलेक्टिंग अ प्लेइंग 11, बट हाँ बिग पिक्चर you would take away a lot of positive as well from what I'm hearing. You're talking about कि मिडिल ऑर्डर जो है हमारा थोड़ा इफ्तिखार की फॉर्म आ रही है, रिजवान ने जो है रन स्कोर किए हैं, तो या नॉट ऑल इज लॉस्ट, राइट? और शुड बॉलिंग में भी उसामा का क्रिटिसिज्म हो रहा था। ही हैड अ एशिया कप के, ही डिडंट हैड अ गुड गेम्स, मगर अभी जो आखिरी गेम ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ है, न्यूजीलैंड वाला, उसामा की परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो राइट राइट गेट वी हैव सम ऑप्शंस नाउ बेसिकली। ऐसा नहीं यस है कि आप लोग 11 जो है आपको वही कीप प्लेइंग दोज 11 इन एवरी गेम। तो आई थिंक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इस वार्म अप की वजह से। ठीक ठीक। अच्छा, एक दो चीजें मैं ऐड कर लूं, देन वी कैन मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक। मैं आप लोगों दोनों से एग्री करूंगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि वार्म अप गेम्स, ऑब्वियसली द आइडिया देयर इज टू फेस टफ कंपटीशन, राइट? बिकॉज अगर आप टफ कंपटीशन के साथ जाते हो तो फिर बाकी जो है आपके आसान हो जाते हैं। तो एज एज अ प्रोफेसर मेरी तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही होती है कि जब किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ट्राई हार्ड प्रॉब्लम्स, राइट? एक थोड़ी डाउन साइड होती है कि बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम्स हो जाए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बट ऐसी कोई चीज हमारे साथ हुई नहीं। वी वर कंपेटिटिव इन बोथ गेम्स। सो यू नो, एंड इंटरेस्टिंगली जो ओरिजिनल स्केड्यूल था उसमें पाकिस्तान वाज सपोज टू प्ले अगेंस्ट Netherlands and Bangladesh in the warm-ups. So we actually asked the ICC to change it to New Zealand and Australia, knowing कि tough games होंगी, but doesn't matter. Play tough opposition so that आपको अपना पता तो चले कि यार हम क्या हैं और हम असल गेम्स में। So that to me was good regardless of the outcome. दूसरी चीज अगेन, विनिंग वाज नॉट दी ओनली थिंग, बिकॉज अगर होती तो फिर बाबर आजम कंटिन्यू करता, ही रिटायर्ड हिमसेल्फ, एंड सो दैट एंड अगेन हमारे कुछ बोथ टीम्स डिड नॉट प्ले टू देयर सॉर्ट ऑफ फुल पोटेंशियल। प्लेयर्स को हमने रिटायर किया, जो की बॉलर्स हैं उन्होंने पूरी ओवर्स नहीं कराए। सो उस तरीके से उसको इतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और तीसरी जो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इट्स रियली गुड, और एक बात जो आसिफ ने लास्ट एपिसोड में की थी इज अबाउट द वेन्यूज, राइट? एंड वी आर द ओनली टीम जो अपने जो एक हफ्ते 10 दिन से एक ग्राउंड एक सिटी के अंदर है, और जिसकी जो फर्स्ट 2 वार्म अप गेम्स भी उसी सिटी उसी ग्राउंड के अंदर है। सो ये हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज होना चाहिए ऑन पेपर वर्सेस टीम्स लाइक नेदरलैंड्स एंड श्रीलंका, who would now have to face sort of more alien conditions versus us. So again, मैं भी आसिफ से agree करूंगा कि winning or losing is not that important. What was more important was trying our resources and getting some answers, which I think we have. तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं जी। I'm sure all of you are excited. The World Cup is about to start. Our first game is on Friday, October 6th against Netherlands. Um, First of all, let's ask our panelists, क्या feelings हैं? Should be an easy game, या guys are nervous? I know Netherlands, किसी टीम को भी हम राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। नेदरलैंड्स ने वेस्ट इंडीज को हराया है, they've chased 375। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। तो कितने कॉन्फिडेंट हैं आप, और क्या हमारी ओवरऑल अप्रोच होनी चाहिए इस गेम? आसिफ, आप स्टार्ट कर लो। हाँ जी, this has to be, we have to be as confident as we can be for this match, because this is, I mean, this is supposedly our easiest match. I don't know if that'll be the case. We had some ODIs against the Netherlands, I think, last year, and all three of them were pretty close. Yes. And like you said, they've beaten the West Indies. They're here for a reason. They qualified and beat some very good teams.
having said that, this is a match that we really should win. We need to, we talk about being aggressive, and I know we'll talk about this a little later on, but they really only have one or two powerful bowlers or fast bowlers. Logan Van Beek and Van Meekeren are the two. If you weather that storm and don't lose too many wickets, we can really feast and build up some runs. And I think, they are going to be in awe of the situation as well. None of these players have played in an actual World Cup. And so this is their first match. So the nerves should be far more for them than for us. But we need a win. We need a win badly. Yeah. And this is the one we take. And so I know we'll talk about net run rate and things like that. For me, right now, we just need a win to get ourselves in a good frame of mind and then build on all of that other stuff afterwards. And Netherlands, interestingly, unfortunately for them, उनकी जो warm-up games भी थी, एक completely wash out हो गई against India, और दूसरी भी was a rain curtail game जो पूरी complete नहीं हो सकी. So they haven't had much practice. और जो practice हुई भी है, उनकी थोड़ी बहुत वो इस ground पे नहीं हुई. So again, on paper, that gives us a big advantage. मुदस्सिर, आप क्या कहोगे about, how do you see this game? I think वो ODI में time होता है तो शुरू में बस थोड़ा take it easy. शुरू के 4-5 ओवर अगर बॉल नहीं मूव हो रहा तो then they can start building on it. अगर पैनिक नहीं करेंगे तो they will end up with a big score. और ऐसी टीम्स के लिए आसान नहीं होता चेस करना. Like anything above 300 against experienced size like a side like us. Right. Although अगर किसी ग्राउंड पे चेज हो सकता है तो वो जो अभी recent evidence वो है वो probably ये ग्राउंड है, right? क्योंकि very high scoring games हो रही हैं यहाँ. और ये कि hopefully तो आपकी bowling थोड़ी compact खेलेगी और थोड़े वो अपने warm ups में उतना tight तो नहीं था ना game. थोड़े experiments भी हो रहे थे तो hopefully भी okay है. तो before we go to the playing 11, एक बात कर लेते हैं कि हमने 2 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड के ऊपर और हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का भी आइडिया है. अगर हम टॉस जीतते हैं तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हमें? सो देयर टू स्कूल्स ऑफ थॉट. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भी अभी आपने देख लिया है कि डिफेंडिंग इज वेरी डिफिकल्ट ऑन दिस ग्राउंड. न्यूजीलैंड, इट वाज अ केक वॉक फॉर देम अगेंस्ट अस. वी टू, वर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ चेजिंग 350. सो एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भी चेज, कि भी जितना भी वो स्कोर बनाते हैं आप चेज कर लोगे. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है जो मैं थोड़ा सा ज्यादा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करता हूँ कि भाई historically we've not been really good chasers. Historically we've liked sort of setting a target, runs on the board and defending. मुझे तो being a passionate Pakistani fan थोड़ी सी nervousness ही होती है every time Pakistan is chasing, especially Pakistan is chasing something above like 270 280 runs. आप क्या एडवाइस करोगे? आपके ख्याल से क्या करना चाहिए अगर टॉस जीतते हैं तो? So I think, first of all, look at the conditions. If it looks like there's seeming conditions, you bowl. I don't know if it'll look like that, but you have to take advantage. Conditions तो वही है ना, वही तो I don't think it's going to change in 2 days. Right? I don't know. I mean, whether if there's some doing something like that, you can assess. I don't think it should be written in stone. I actually would chase because like you said, historically we don't like to chase. The entire world knows that, and I guarantee we're not going to win 9 tosses, and teams are going to make us chase. So if there's any team that we feel like we are more comfortable chasing against, this would be the one to get us some practice with that. And also, as of now, our batting is stronger than our bowling. I hate to say that, but that's where we are. And so why not finish the match with your strong suit? I'm not going to say this for every match. I'm, like you, a passionate Pakistan fan who loves to defend. But this is one time where I would buck that trend for the reasons that I just enumerated. I think that if we had the choice, I would chase. So even अगर supposing 300 runs बना लेती है Netherlands, you'll still back up batters. Once they've scored 300, I wouldn't be happy. My hope would be that we restrict them to less than 250. Of course. But these are flat pitches, right? So again, these are flat pitches, and if they can score 300 against us, then why can't we score it against them? And against a team like Australia, and granted they weren't playing full, we scored pretty much high score. We scored 345 against New Zealand on this ground. So again, they only have 1 or 2 bowlers you need to worry about. I still would feel confident that we can chase against this team in particular, that we could chase a big total.
You know, we're going to have चले to do it 1-1 हो sooner गया. or later. We're not going to win the World One Cup. vote for defending, one for chasing, one for setting a target. Let's break the tie. Let's see what Mirza feels. Mirza, आप क्या करोगे अगर आप हो? गेम Again, depending on the conditions, but just based on what we've just seen on the ground. आपको याद है जो जितने पुराने गेम हम हारे हैं मिनोज से इन द पास्ट, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश, सब चेस करते हुए आ रहे हैं. That was first. यानी और इवन जो अभी हराया था इसने नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी, साउथ अफ्रीका भी चेज ही कर रहा चेस करते हुए कुछ ना कुछ था, और होता एकदम से है. वो पैनिक हुई और वो और you know I have to look at the official stats. The the way things are going, अभी मैं 15-20 वनडे ODI तो दुनिया भर में जितने भी हुए team batting first are winning over with a big it's a like a big like overwhelming percentage, like 90%. Yeah, so actually I have the stats for this particular ground. So और T20 में is opposite. T20 में team batting overall have it makes sense. You T20 में if you bat first and you play too risky, you can get out at 120. तो team batting second पे advantage होता है. As an advantage, they know exact target. Yeah, but और ODI में ये होता है कि there is no pressure in the end if you have wickets. The teams are now scoring like 120. Some teams scored. South Africa scored like 150 in last 10 against Australia. 170. तो वहां से I think वो जो boost end का ना 10-15 overs का वो बहुत बन रहे हैं यार. 150-200 रन बन जाते हैं आखिरी 15 ओवर. सही. अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे तो मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं ग्राउंड की. सो देयर बीन 7 ODI मैचेस. उसके अंदर से 7 में 4 times out of 7 the match has been won by the team batting first, and 3 times it has been won by the team chasing. So there's not much difference. It's roughly 50-50. The average score is around 290. So it's 288 to be precise, so close to 300. But again, मेरे लिए once an opposition, regardless of whether it's Netherlands or whichever team, is close to 300, somehow as a fan, I know कि अब historically वो चीज नहीं है जो एक जमाने में होती थी. We're a much better batting side than we used to. But somehow एक 300 का जो एक figure है वो एक psychological एक pressure आ जाता है. That's I hope कि ऐसा ना हो. I agree with that, but we can't win this World Cup without chasing. We're going to have to chase against someone. Yeah. So but do we have to opt for it? Do we have to opt for it, or do we leave it for the times when we lose it ourselves? So if we win chasing, we have this under our belt. So the next time we have to against a really good team, we can say, look, we did it against them. We know how to go about doing it. I know you can argue this both ways. But then if we lose against Netherlands, right? If we lose, then we're done anyways. Yes. So we need to win. We need to win, and we can win the hard way. Yeah, और एक और interesting चीज है, the stats are deceiving. क्योंकि मैं भी देख रहा था Indian स्टेडियम्स के एवरेज स्कोर्स. वो पता है क्या हो रहा है, वो जितने भी ODI हुए हैं 15-20 पिछले 10-15 साल में, वो सब का एग्रीगेट हो गया. तो पहले ओवरऑल रनिंग जो स्कोरिंग रेट है वो ऊपर जा रहा है. तो ये दिस इज नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ रन्स स्कोर्ड. अगर आप आई थिंक पिछले 5 साल कट ऑफ करके देखो ना, दैट विल गिव तो ज्यादा है. नहीं, आप सही कह रहे हो कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में ज्यादा गया, ऊपर गया. सो वो तो चीज है, वो दैट्स आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ द काइंड ऑफ क्रिकेट व्हिच इज बीइंग प्लेड. एंड अब आई डोंट नो जो बाउंड्रीज हैं वो वही रखेंगे जो वार्म अप्स में है, या देयर वाज अ टॉक कि बाउंड्री थोड़ी लंबी करेंगे. 70 मीटर्स. दैट माइट इंपैक्ट एज वेल. तो चले जी, होपफुली हम सारे यही एग्री करते हैं कि ऑन पेपर वी आर अ मच स्ट्रॉन्गर साइड. वी हैव नेवर लॉस्ट अगेंस्ट नेदरलैंड्स, एंड इफ वी आर टू डू वेल एंड go to the semi-finals, this is a must-win game. I mean, Netherlands से भी अगर आप नहीं जीतते तो then it's going to be very, very difficult for you to go forward. Having said that, we did lose from Zimbabwe in the last T20 World Cup. And then we reached the finals. Yes, but that उसमें फिर हमें divine intervention और कर्मा और उन चीजों के बारे में. So enough, we don't want to put ourselves through that agony. Hopefully, we do it the easy way than having to rely on these permutations. We will never do it the easy way. You know that. चलें जी. अच्छा, इसमें अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की. सो ऑल्दो वी डिड से कि काफी हद तक सेटल्ड है, बट देयर आर अ फ्यू क्वेश्चन मार्क्स. सो लेट मी टॉक अबाउट अ फ्यू की क्वेश्चन मार्क्स वी हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग स्लॉट, फखर वर्सेस अब्दुल्ला. देन कम्स द स्पिनिंग ऑप्शन, वी हैव शादाब वर्सेस उसामा. फिर बात आती है मिडिल ऑर्डर की, साउद वर्सेस आगा सलमान. और फिर चौथी बात आती है
हमारे थर्ड पेसर की, हसन अली वर्सेस जूनियर। तो ये हमारे की इश्यूज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फखर वर्सेस अब्दुल्ला फर्स्ट। फखर नॉट बीन इन गुड फॉर्म। अब्दुल्ला को ट्राई किया हमने श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 50 रन भी बनाए। बट अभी जो दो वार्म अप गेम्स में है उसकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। So should we stick with Fakhr then and hope he sort of gets back in form? Yeah, do you think Abdullah should get drafted in the playing 11? फखर की हम बैकअप हमारे पास है ही नहीं, हम लेके ही नहीं है। Hmm. ये जिससे किसी चीज के इंग्रेडिएंट होते हैं ना डिश के, तो टीम के इंग्रेडिएंट होते हैं। अगर आप इसी टीम में अब्दुल्ला डाल दो और वो रन पर स्ट्राइक रेट अगर उसका 80 पे हो, फिर आपके पास अब्दुल्ला है, इमाम है, बाबर, रिजवान, तो ये सब एक जैसे बैट्समैन सारे राइटी, फखर एटलीस्ट लेफ्टी भी है। और उसका रैकेट, आई नो ही इज हैविंग अ लाइक अ लीन पैच राइट नाउ, तो यू नीड टू फाइंड आउट हिज बैकअप फर्स्ट। अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, साइम अयूब होता आपके पास बैठा हुआ, या उसको खैर Hmm. हमने खिलाया नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तब इट मेक सेंस टू चेंज फखर। So मेरे like for like replacement नहीं होगी, like for है ही like नहीं, replacement नहीं आप होगी। आपके, हाँ, दिस इज आपके पास है ही नहीं। अगेन यू गाइस माइट डिसएग्री, मगर उस बंदे को उसका फॉर्मेट ही नहीं खिलाया जो शान के जैसे 100 फर्स्ट क्लास मैचेस थे, 57 एवरेज वो है। याद शाम या को। नहीं नहीं नहीं, लेट उसको आपने वनडे खिलाते ही नहीं हो, आप उसको T20 में ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर। तो Hmm. शान कुड हैव बीन हिज बैकअप। इस वक्त तो फखर का बैकअप ही नहीं है कोई, किसको खिलाओगे आप? Hmm. Sean is nowhere near the quality of batsman that Fakhr is. Come on, look at his record. How many ODI Shan has played? Do you know? Not enough to make him a comfortable pick for the I think World Cup. न्यूजीलैंड के And अगेंस्ट for हमने उसको 2-3 गेम्स दी थी and he didn't हाँ, perform the नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज total. में। Do you guys know how many he has played total? how many? 9. Oh, So he does not have the experience that would qualify him to play. oh, that's fine. Magar, you need Saim Ayub or some or Hmm. people like who are Ah, like. that's fine. But I would say चले there's a चले टीम reason. तो हमारे पास जो है सो है। आई मीन दिस आई थिंक Ah, द ah, कॉन्वर्सेशन वी कैन हैव। अगर Yeah, हमारी yeah. अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती yeah. I'll just तो say there's a ऑब्वियसली। reason. So, There's a reason Sean is not there. हाँ, the Um, problem is कि फखर का replacement भी नहीं है आपके पास. There is तो no. आसिफ आप भी एग्री करोगे फखर Ha, वर्सेस yeah, अब्दुल्ला? I mean, and we'll get to this later. I have two possible playing 11s that I would go back and forth with throughout the whole tournament, and one of those playing 11s has both Fakhr and Abdullah there, with Abdullah coming one down. In which case, I would be dropping Nawaz, right? If Nawaz is playing and you have two spinners, Shadab and Nawaz, then I would take, and I had to drop one of those three. I would drop Abdullah and keep Fakhr and Imam. अच्छा, वही चीज के भी थोड़ा सा एक्सप्लोसिव स्टार्ट की Yeah. you're hoping, स्पेशली जो फर्स्ट 2 गेम्स के अंदर, बिकॉज ऑन पेपर फ्लैट ट्रैक है। नेदरलैंड्स इज नॉट अ वेरी गुड bowling साइड, तो Yeah. गेटिंग हिम बैक इन फॉर्म। On this ground today, he scored 20 the other day against Australia, he scored 20 runs in 22 balls with 4 fours. That's Yeah, much more of a Fakhr type innings than what we've he been seemed to seeing. be in better nick. I mean, Yes. admittedly he seemed to be in better nick. Yeah. वो चीज फॉल ओवर नहीं कर रहा था उसका हेड थोड़ा सा। And the bigger thing, to point to your point, Simon, from before, he seemed to be in a better headspace. That's what he needs, right? या और आई गेस जो उसको रेस्ट मिला थोड़ा सा, मे हाँ. बी दैट्स अलाउड हिम टू Yeah. रिफ्लेक्ट एंड Yeah. कम। अच्छा, दूसरी चीज, चले मैं भी एग्री करता हूँ आपसे। ऑल्दो देयर वाज अ टाइम कि मैं सोच रहा था कि नहीं यार, Yes. अब्दुल्ला को चांस देना चाहिए, बट आई हैव सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड बैक टू फखर नाउ, One innings. given Yeah. के अब्दुल्ला हैज आल्सो काइंड ऑफ sort of disappointed, has not really after the chances that he got. So अगर वही चीज है तो फिर might as well go for the potential and upside potential with Fakhr. Shadab versus Usama. Now this is a tricky one because we know Shadab is the vice captain. It's going to be very difficult to drop him. But जो अभी आपने recent performances देखी हैं, don't you think Usama seems a bit more penetrative? I mean, Shadab is bowling full tosses, he's throwing half trackers, seems completely out of sorts in terms of his confidence as a bowler. If we are to take wickets in the middle, don't you think Osama might be a better option? Admittedly, batting थोड़ी सी हमारी weak हो जाती है, but do we need that extra batting? Yeah, if Nawaz is there, then he would be sort of the all-rounder and we can drop Shadab and play Osama. मुदस्सिर, आप क्या कहोगे इस बारे में? यार वो VP है, how you gonna drop him? तो आई मीन आंसर वीपी है यही तो है, इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस उसकी बुरी भी है तो हम खिलाएंगे, राइट? बिकॉज परफॉर्मेंस वीपी है या एग्जैक्टली, वरना तो रोटेट करना चाहिए, मगर मुझे नहीं पता वो उसको VP बना दिया, हाउ सो किस तरह हम्म, वरना उसामा की
खास तौर पे जो वार्मर्स में जो बॉलिंग की, ही डिजर्व्स टू प्ले अ गेम. ये इट वुड हैव बीन परफेक्ट गेम. मिनोस के था तो शादाब को बैठा के खिला लेते. तो मुझे नहीं पता कि दे कैन, Yeah. यही Let, प्रॉब्लम. let me play the devil's advocate and say a match against the Minnows would be a great opportunity for Shadab to discover his form. Because look, we need Shadab firing to win. You know, like I said before, he's a live wire in the field. He really exudes positive energy when he's doing well. And batting wise as well, and field bowling. Maybe this is the kind of team he needs to play against in order to really kind of flick that switch, because again, we need that. We absolutely need an aggressive Shadab who is taking wickets. I look, admittedly, and I'm speaking from a position of little ignorance, I've not seen Osama bowl that much. What little I have seen in the Afghanistan series, and I think he's a player for the future. I don't think he's necessarily ready for the big time, but I could be wrong. But I think, like Ikto, number one from Madassa said, he's the vice captain, and Babar and him and Rizwan, the three of them, they're never dropping each other. That's just not happening. But if you could choose, I would still say this is the match I want Shadab to go and rediscover something that's going to help bring us forward in the more important matches. Right. But vice captain ka role, I mean, I know, yes, he's a vice captain, but does a vice captain really matter? Or मेरे हिसाब से तो To us, maybe not. बाबर ही ले To रहा them, होता है, it right? does. To Babar, it does. Babar is a very, he likes who he likes, right? And that plays a big role in who he selects. We know that. So unless sort of Shadab is injured, we don't then see. I mean, I would have, frankly, अगर आप मुझसे पूछो, I would like Osama to play. Yeah. I mean, given के Shadab has been so disappointing, Yeah. I hope he gets back in form. But on current form, I'm thinking that I think wicket taking में Osama gives us a better option. I think that's very legitimate. I think Shadab could bowl in the real match. He could bowl 9 overs for 97 like Haris did, and they still probably won't drop him. I think if he's the one saying our 11 is settled, he's counting himself in there, I think. But yeah, I agree with you. Yeah. So फिर all this talk about अबरार को try करना चाहिए था, Osama and all, फिर तो meaningless हो गया ना. फिर अगर तो फिर शादाब नहीं खेलना है और नवाज नहीं खेलना है, so फिर what's the point, right? चलें देखते हैं. Like hopefully Shadab, there has been some historical evidence के I think 2019 World Cup के अंदर भी leading up इतनी अच्छी performance नहीं थी. There were 2 ICC tournaments where he looked horrible going into it. Suddenly he found his mojo. Again, like I said before, you've reached number one with these players. At a certain point, you need to have a leap of faith to some extent to say they're the guys who got us there. They're the guys on whose backs we have to win. But I think your points are very legitimate. It's hard to argue against that. चलें साउद वर्सेस आगा सलमान की बात कर लेते हैं. साउद really did well in that one game. I was hoping कि उसको आज भी चांस मिलता, but they tried. Aga did not do well today, and recent past के अंदर भी कोई आगा की उतनी कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं रही. So given that, जो एक क्वेश्चन मार्क था साउथ का कि भी वो छक्के नहीं मार सकता, बाउंड्रीज नहीं, उसने वो भी करके दिखा दिया आपको. So do you think साउथ के साथ जाना चाहिए? I would go with South, but I'd like to hear your views on South versus Aga debate. Yes, sir. पिछले प्रोग्राम में मैंने यही तो कहा था कि you have to respect form. फॉर्म में है कौन पूरी पाकिस्तानी बैटिंग में? एक तो इफ्तिखार वाइट बॉल में, और जिस तरह सऊद ने टेस्ट शुरू किया है 750, उसके पीछे बहुत डोमेस्टिक है. लिस्ट ए लाइक 100 गेम्स है, और ये लिमिटेड ओवर्स, यू मीन? दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. लाइक चाचा के 100 गेम्स है, सऊद के 100 गेम्स है, वो आते हैं, दे फिट लाइक अ ग्लव क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है. तो मेरे लिए इट्स अ नो ब्रेनर एक्चुअली कि सऊद शुड हैव बीन ट्राइड. जितना उसको आप डिले कर रहे हो, आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर द टीम. मुझे अभी भी नहीं पता कि सऊद को ये, आई वुड हैव accommodated him, especially जो पहला गेम है. आई थिंक सऊद आपको ये स्पेशली मिनोज टाइप के गेम में भी थोड़ी स्टेबिलिटी दे देगा बीच में. तो आई विश दे start playing Saud, मगर his lack of experience, not experience in list A, but lack of experience in ODI, वो आपके ख्याल से वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, like because list A में उसका अच्छा है और recent जो उसने एक दो performances दी हैं, so you're confident के in this debate. बाकी players के भी games बहुत ही कम है यार. अब्दुल्ला की भी कम है, right? To me, so I will play the devil's advocate again. Look, I like Saud a lot. I think he has a big role as a number 4 for us in future, but I think we have not, like Abdullah, we've not seen enough of him on the international stage in limited overs cricket
to rely or depend on him the way we have with Agha. You know, against New Zealand, Agha scored pretty well. We know that, again, Agha is a multidimensional player. He does not drop catches, hopefully. He's a bowling option, and he is able to hit. You know, not just is he able to hit sixes, but he reverse sweeps. We don't have many players. In fact, we don't have any players on this team who bat 360, you know, who do the reverse sweeps, who can, you know, improvise. And Agha has done that. He's done it successfully. Fine, form has been off a little bit here and there, but he's also, to me, he's shown me enough to where look, he's someone who I did not know anything about him. I've said this before, and he has proven time and time again that he is up to the task. So I would actually choose Agha. Yeah. But आज के game में don't you think he had a good opportunity to sort of end this debate कि अगर आज एक solid performance दे देता वो जब बाबर retire हुआ और आगा सलमान आया and we were requiring what 6.5, 7 runs and over. Yeah, it wasn't it's too a practice hard. match. It's one match though. I mean, I would never hinge an entire selection on how you perform in one given match. Look, I would so we've alluded to this before. So that when I say this, I don't mean Saud should be out of the picture. Against Afghanistan on a spinning wicket, Saud should be in there, hands down, no question about it. And it's horses for courses. But I think your standard team, I would put Agha in. But when I know that they're going to be spinning a very potent spinning attack we're facing, or a very potent or difficult spinning conditions, then I would put Saud in. Not necessarily for Agha. We could mix and match things around there as well. और ये लोग भूल जाते हैं कि सऊद का जो डेब्यू था वो इंग्लैंड में था 2019 या 19 या 20 2-3 साल पहले था एक्चुअली he got like 2 ODIs maybe और उसने 50 की थी अपने डेब्यू सेकंड गेम में और it was a good 50 के it was after a collapse वो लोगों को बल्कि मुझे भी उस दिन ढूंढनी पड़ी नहीं मुझे याद था कि he scored and then he had this crazy sinus surgery and then he disappeared तो इसने थोड़े ये दूसरा फवाद आलम है ये ग्लैडिएटर की बेंच पे बैठा हुआ है 3 साल से बेचारे की लक नहीं है 3-4 साल से just not so he's there for the future and look and now as well but I would go I think Agha has proven himself time and time again in international matches recent performance नहीं Agha की थोड़ी disappointing रही है but if we play Agha do you think we play him as an all-rounder, we rely on a few of his overs as well, or would you be playing him solely for his batting talent? Because अगर batting पे जाना है तो वो तो फिर साउथ ने भी जिस तरीके से उसने against New Zealand attack छक्के मारे थे, he's put his hand up, right? No, I would use him as a bowler as well. I think your fifth bowler, especially in matches where I'm leaving Nawaz out, I would, split that quarter of overs between Agha and Iftikhar, and go with that. He doesn't look like a very good bowler. He looks fairly innocuous. He gets wickets. It's like Iftikhar. You look at him, you think, ye to kuch bhi nahi hai, and they end up taking wickets. So I actually think, and again, you look at his hand, he's got big hands. He does not drop. He takes very good catches, which Saud does as well. But fielding is important. And I think Agha is important in that sense as well. Yeah. The only reason, एक और चीज के हाँ तब it makes sense कि अगर आप नवाज को ड्रॉप करो और आगे खिलाओ देना है मुके नवाज ने आफ्टर टुडेस 50 आज 50 भी कर लिया उसने अच्छी इनिंग्स थी उसने बॉलिंग How did he bowl? I didn't see. Wasn't bad. He took a couple of wickets early on. He was more economical than the others. I didn't see all of his bowling spell as well, but his figures look decent. I mean, better than the others. Because a strong Nawaz would really offset an off-color Shadab as well. Yeah. And again, अगर वो नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है with both ball and bat, तो फिर दोबारा question raise हो जाएगा कि does Shadab continue to play just because he's vice captain, or can we bring in Osama? The last sort of question mark we have, I think this is perhaps the easiest, but still would like your views on the Hassan versus Junior debate. बहुत अरसे से हम जूनियर को कैरी कर रहे थे. So you would have thought कि Junior would be sort of in terms of the pecking order, he would come next. But अभी जो performance रही है उसकी Junior seems out of form, काफी runs पड़ रहे हैं उसको. उसके मुकाबले में हसन आपके ख्याल से जो उसने 2 मैचेस में ही हमने उसको देखा है, but he seemed more decent. I mean, एक के अंदर उसने आते साथ विकेट भी ले ली, दूसरे के अंदर जो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गेम हुई है उसके अंदर भी जो उसका ओपनिंग स्पेल है, he was economical, he was moving the ball. क्या कहेंगे इस बारे में हसन वर्सेस जूनियर डिबेट? Asif, you're shaking your head, so you agree? I think, new ball, because Harisov is not going to bowl the new ball. So you need someone who bowls with a new ball. Hassan has done that in test matches. He has shown he can do it
in ODIs as well. And Wasim's not that type of a bowler. Hassan bats well. He is another energy player, like a Shadab. When he's firing on all cylinders, his energy, his positivity is contagious, and it really, really rubs off on the rest of the team. So, look, he dropped one catch in one match that really hurt us, and we all punish him for that. But he's earned his way back into this team as our 7th choice pacer. I would choose him over Wasim right now. Wasim on paper looks good. You see him in PSL and things like that. He bowls his Yorkers. Even that's not even firing. So for me, this is a no-brainer because it's the new ball. It's all about the new ball. And for that, I'd take Hassan Ali. मगर एक चीज ये बताएं आप लोग कि इवन वसीम भी और ऊपर से जमान either one मेरे ध्यान में ना they are always like a 4th option. जैसे if you drop Hassan Ali, let's say, going with Rauf, Shaheen or Wasim, it doesn't sound right? Open कौन करेगा? मगर अगर आपके पास शाहीन है, रऊफ है, हसन है, और if you play जमान और जूनियर है, जमान तो खैर ट्रेवल रिजर्व में है, तो अगर 4 पेसर आप खिलाते हैं, आप शादाब आपके पास ऑलरेडी है, ये 5 बॉलर हो गए, और 6ठा स्पिनर बजाय नवाज खिलाने के या किसी को खिलाने के आप आगा और इफ्तिखार से करा सकते हैं बॉलिंग. तो ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि क्योंकि जगह अभी भी है, you can still play 4 pacers depending upon the pitch and condition. तो जूनियर That's what it comes down to. जूनियर फोर्थ पेसर में या तो कोई क्वालिटी पेसर हो ना, अगर आपने फोर्थ पेसर जूनियर को खिलाना है, जूनियर इज नॉट परफॉर्मिंग. नहीं यार, जूनियर को अभी एशिया कप से पहले आई थिंक उसको अगर लेट यूज करें तो वो ही उसका नीच था. उसको शुरू में ओवर देते हैं तो वो तो उसकी पिटाई हो जाती है शुरू में. तो 4th पेसर शायद उसकी जगह बन जाए, मेरा अभी भी ख्याल है. As a 4th pacer, he doesn't have to bowl 10 overs either. Yeah, if there's a match where we need a 4th pacer, then it has to be Wasim, right? और तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास पेसर का. तो वही है. 3 में if you're playing 3, then वो तो फिर हसन अली है न्यू बॉल की वजह से. ठीक. अच्छा, उसमें आई होप कि हसन को अगर खिलाते हैं तो अगर उसकी बैटिंग आती है तो थोड़ा सा, I mean, yes, Asif was saying yes, he's a good batter as well. But आज जिस तरीके से वो आउट हुआ है, admittedly it was a warm-up game, but फिर भी you would like to win, right? So you're requiring what 14 or 15 balls, run a ball, and he tries to hit a 6 and gets out. Very irresponsible. So one would have expected, It's more maturity out of Hassan Ali. Yeah, it's very on brand for him. That's what he does. And when it connects, it's great. When it doesn't, it looks terrible. But that's that's how he is. Yeah. So talking about these bowling all-rounders, वो हांगकांग का गेम का देखा स्कोर कार्ड? आमिर जमाल scored 41 runs on 16 balls. Pakistan was like 117 run in 17 over, 6 down, 7 down, and I think they scored like 50 runs in last 3 overs. Yeah, so had a decent. No, Amir Jamal did very well. In fact, ये वही बात काफी लोग कर रहे थे कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं काफी देर से फहीम में, तो फहीम की जगह में भी आमिर जमाल. And again, this is a conversation we can have after the World Cup. मगर he can challenge Wasim and Wasim and Rana Saab and all these guys. Yeah. ठीक है जी, thank you very much. This concludes our episode. Again, excited about the start of the World Cup. Excited भी हैं, obviously nervousness भी होती है. The first game is important. एक तरह से एक अच्छी चीज भी है कि on paper it's a weaker opposition, but at the same time it puts a lot of pressure on us as well, is because we can't afford to falter. So we have to do well. We have to start on a winning note. But inshallah, we are confident the team will do well. And the fact that they've played on this venue now for 2 warm-up games, and they're playing their first 2 games against Netherlands and Sri Lanka on the same venue, augurs well for us. And we are at the top of the points table right now. ठीक. चलें जी, इसके साथ ही आप लोगों के साथ हम ज़्यादा चाहेंगे. We do intend कि as the World Cup continues, आपके साथ हम on a sort of continual basis राब्ता करते रहें, आपको अपने व्यूज देते रहें. Hopefully our team continues, does well, ताकि ज़्यादा मज़ा भी आए आपके साथ बात करने. चलें जी, thank you so much. पाकिस्तान जिंदाबाद.